हाय गाइस। तो आपका स्वागत है सीए इंटर ऑडिट के रेगुलर क्लास में मेट फॉर मे 25 एंड सितंबर 25 स्टूडेंट। ठीक है। तो कल हम लोगों का चल रहा था एसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। उसमें हम लोग देखे थे कि टू टाइप्स ऑफ कंफर्मेशन लास्ट देखे थे। टू टाइप्स ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट होता है, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एंड नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या है? इट आस्क्स द कंफर्मिंग बॉडी टू reply to the auditor in all cases, either by agreement with the given information or by asking the confirming party to provide information. तो ये सारे चीज देखे थे। नेगेटिव कंफर्मेशन नेगेटिव कंफर्मेशन में देखे थे कि द ऑडिटर शैल नॉट यूज द ऑडिटर शैल नॉट यूज नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एज द sole substantive audit procedure। ठीक है, टू एड्रेस एंड असेस रिस्क मटेरियल स्टेटमेंट। ये ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सोचिए कि मैनेजमेंट ऑडिटर को अलाउ ही नहीं किया कि भाई आप जो कंफर्मिंग पार्टी है या फिर थर्ड पार्टी है उसको आप कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजो। ठीक है, तो क्या करेंगे? अभी तक पूरा सही चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया। तो लिखिए, if management refuses to allow refuses to allow the auditor the auditor to send a confirmation request to send a confirmation request the auditor shall if management refuses to allow the auditor to send a confirmation request, तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए? ऑडिटर को क्या करना चाहिए? पहले तो इंक्वायरी करो कि भाई मैनेजमेंट का रीजन क्या है। इंक्वायरी as to management as to management reasons for refusal, reasons for refusal। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा, इवेल्युएट द इम्प्लीकेशन। इवेल्युएट
the implications the implications of of management's refusal on the auditor's assessment on the auditor's assessment of the relevant risks of material misstatement of the relevant risk of material misstatement, and the third part is perform alternative audit procedure. Audit procedures designed to obtain designed to obtain designed to obtain audit evidence to obtain relevant and reliable audit evidence. Reliable audit evidence. ठीक है, तो अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दिया कि भाई तुम if management refuses to allow the auditor to send a confirmation request to the third party, ठीक है, तो क्या करना चाहिए? इंक्वायरी एज टू मैनेजमेंट रीजंस फॉर रिफ्यूजल. पहले तो रीजन पूछो कि भाई तुम्हारा रीजन क्या है. ठीक है, फिर उसका जो इम्प्लीकेशन होगा इवेलुएट द इम्प्लीकेशन. ठीक है, फिर उसका कुछ ना कुछ तो इम्प्लीकेशन होगा ना कि भाई वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. अगर सोचिए रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत बड़ा है तो ऑब्वियसली उसका इम्प्लीकेशन भी वास्ट होगा. तो वो इवेलुएट करो ऑन द रिलेवेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर. अगर वो नहीं हुआ तो दूसरा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करो. ऑडिट एविडेंस तो चाहिए ना. ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन टू ऑब्टेन रिलेवेंट लेवल ऑडिट एविडेंस. ठीक है, अच्छा ये सोचिए कि भाई सब कुछ किया. ठीक है, if the auditor conclude that management refusal to allow
the auditor to send a confirmation request. ठीक है, अभी सोचिए कि ये ऑडिटर कंक्लूड किया कि मैनेजमेंट जो रिफ्यूज किया है वो अनरीजनेबल है. Management conclude the managing refusal to allow the auditor to send a confirmation request is unreasonable. ठीक है, तो तब क्या, या फिर और the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence. ऐसे भी तो हो सकता है ना कि ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला. द ऑडिटर is unable to obtain relevant and relevant reliable audit evidence. From alternative audit procedure performed. Obviously from alternative audit नहीं अभी नहीं करते. Audit procedure with procedure performed. ठीक है, तब क्या करेंगे, तब करेंगे थोड़ा गैप देख के लिखिएगा. द ऑडिटर द ऑडिटर shall communicate with TCWG with TCWG में those charged with governance in accordance with ऐसे in accordance with ऐसे 260. ठीक है, the auditor shall communicate with TCWG ठीक है, in accordance with ऐसे 260 and the auditor shall determine the implication for the implication audit and the auditor's opinion and the auditor's
opinion in accordance with SS Shastra 5. In accordance with SS Shastra 5. ठीक है. The auditor shall determine the implication for the audit and the auditor's opinion in accordance with SS Shastra 5. तो अभी मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दिया तो क्या क्या करना चाहिए? पहले तो इंक्वायरी करो कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्वायरी एज टू मैनेजमेंट रीजंस फॉर रिफ्यूजल. उसके बाद इवेल्युएट करो कि इम्प्लीकेशन क्या होगा मैनेजमेंट रिफ्यूजल का उस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में. ठीक है. ऑडिटर का जो असेसमेंट करेगा रिस्क ऑफ मटेरियल उसमें इम्प्लीकेशन क्या होगा. तो इवेल्युएट द इम्प्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट रिफ्यूजल ऑन द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ द रिलेवेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. ठीक है. अभी अल्टीमेटली ऑडिट एविडेंस तो चाहिए ना, इसीलिए परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन टू ऑब्टेन रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस. Suppose if the auditor conclude that management refusal to allow the auditor to send a confirmation request is unreasonable. अभी ऑडिटर कंक्लूड किया है कि मैनेजमेंट जो रिफ्यूज किया है कि अलाउ द ऑडिटर टू सेंड अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इज अनरीजनेबल. तो और द जो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया गया है, द ऑल्टरनेटिव ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन ऑडिट रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म. जो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया गया है उसमें से रिलायबल एंड रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस नहीं ऑब्टेन हो रहे, तो क्या करेगा? तो ऑडिटर शैल कम्युनिकेट, पहले तो कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यू दो चार्जेड गवर्नेंस है इन अकॉर्डेंस विद 260 आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 7 में. एंड द ऑडिटर शैल डिटरमाइन द इम्प्लीकेशन फॉर द ऑडिट एंड द ऑडिटर्स ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद एसएस शास्त्र पास. एसएस शास्त्र पास में मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन वो आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 8 पे. ठीक है. अभी सोचिए कि ये सारे हो गए आपको, ऑडिट एविडेंस भी मिल गया. ठीक है. अभी उसको इवेल्युएट तो करना पड़ेगा ना. तो लिखिए when evaluating the the results of individual individual external confirmation request external confirmation request the auditor may categorize such results such results as follows. मतलब ऑडिटर ये नीचे दिए गए अभी जो मैं लिखूंगा उसमें ऑडिटर में कैटेगराइज, तो इसमें कैटेगराइज कर सकता है ऑडिटर. अभी क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल a response by the appropriate party a response by the appropriate party
पार्टी नहीं लिख के, ये थोड़ा गंदा दिखेगा ना, एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी, एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी, indicating agreement, indicating agreement with the information, with the information provided in the, provided in the confirmation request, confirmation request, or providing, or providing requested information, requested information without exception, without exception, ठीक है। ये रिस्पॉन्स क्या, एक रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी, ए रिस्पॉन्स बाय द एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी, एग्रीमेंट किया है कि भाई हाँ भाई एग्री किया हो कि आपका जो इंफॉर्मेशन है कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में वो करेक्ट है, और प्रोवाइडिंग रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन, और प्रोवाइडिंग रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन विदाउट एक्सेप्शन, मतलब जो अगर 50,000 का डेटर है तो डेटर भी कंफर्म किया कि हाँ भाई 50,000 का ही बैलेंस विदाउट एक्सेप्शन। सेकंड कैटेगराइजेशन में भी ए रिस्पॉन्स, ए रिस्पॉन्स deemed unreliable, deemed unreliable, थर्ड कैन बी, भाई रेस्पॉन्स ही नहीं किया, ए नॉन रेस्पॉन्स, 2 मिनट आपसे रुकिए, 2 मिनट, ए नॉन रेस्पॉन्स और क्या हो सकता है, ए रेस्पॉन्स इंडिकेटिंग, मतलब एक्सेप्शन, ए रेस्पॉन्स इंडिकेटिंग एन एक्सेप्शन, ठीक है। तो क्या क्या है, एक तो एग्रीमेंट कर दिया या फिर जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो भेज दिया है, दूसरा है डीम्ड अनरिलायबल, एक है नॉन रिस्पॉन्स और एक है एक्सेप्शन, है एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये चार चीजों में आप कैटेगराइज कर सकते हैं ऑडिटर। तो अभी ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन खत्म हुआ आज, एक्सटर्नल कंफर्मेशन खत्म हो गया, अभी स्टार्ट होगा ऐसे 510,
इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट मतलब जो ओपनिंग बैलेंस चेक करना होता है ना, लाइक आप जो ऑडिट करने जाओगे, आप तो सबसे पहले देखोगे कि जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है वो इस साल के ओपनिंग बैलेंस से मैच हो रहा है कि नहीं। ये तो कम है क्योंकि पिछले साल का जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा वो तो ऑब्वियसली इस साल का ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए ना। तो यही बात है। और ओपनिंग बैलेंस को चेक कैसे करेंगे ये सारे, तो हेडिंग कीजिए इससे 510, इससे 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, ओपनिंग बैलेंसेस, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, द ऑडिटर with respect to, with respect to opening balances, opening balances is to obtain, is to obtain sufficient appropriate, sufficient appropriate audit evidence, audit evidence about क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, about whether opening balances, opening balances contain misstatements, contain misstatements that materially affect, that materially affect the current period's financial statement, current period's financial statement, and appropriate accounting policies, appropriate accounting policies reflected, reflected in
the opening balances, the opening balances have been consistently have been have been consistently consistently applied in the current period financial statement, or changes thereto, मतलब ऐसा हो ही सकता है कि भाई अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज हुआ है, ठीक है, देयर टू आर are properly accounted for properly accounted for and adequately presented and disclosed in accordance with applicable FRS and disclosed with applicable FRS applicable फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? अबाउट whether the opening balances contain misstatements that materially affect the financial statement, current period financial statement, ठीक है, and appropriate accounting policies reflected in the opening balances have been consistently applied in the current period। मतलब जो अकाउंटिंग पॉलिसीज ओपनिंग बैलेंस में रिफ्लेक्ट कर रहा है वो कंसिस्टेंटली अप्लाई कर रहा है करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी। एंड इफ देयर इज अ चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज और चेंजेस देयर टू, अगर चेंजेस हो भी सकता है देयर टू आर properly accounted for and adequately presented and disclosed with applicable efforts, ठीक है। भाई अकाउंट तो करो ही करो, उसके साथ एडिक्वेटली प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज भी करो, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अभी आपको बोला गया है, इसका ऑब्जेक्टिव बोला गया है कि ओपनिंग बैलेंसेस वेदर ओपनिंग बैलेंसेस द ऑडिटर शुड obtain sufficient appropriate audit evidence about whether opening balances contain misstatement that materially affect the current period financial statement। लेकिन आप खोजोगे कैसे? तो आप 2 मिनट दीजिए बस, मैं थोड़ा आया, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा थोड़ा इमरजेंसी आ गया था, ठीक है। हाँ, द ऑडिटर, देखिए हेडिंग, द ऑडिटर shall obtain shall obtain sufficient appropriate
sufficient, appropriate, audit evidence, audit evidence about whether the opening balances, about whether the opening balances, whether the opening balances contain misstatement, contain misstatement that that materially affect affect the current period's financial statements, current period's financial statement by कैसे. Okay, the auditor shall obtain sufficient appropriate audit evidence about whether the opening balances contain misstatement that materially affect the current period financial statement. By कैसे. पहले तो डिटरमाइन करो. डिटरमाइनिंग whether the prior periods closing balances have been consistently sorry correctly brought forward for the current period. मैं आपको बोला ना, brought forward to the current period. The current period. Or when not inapplicable, when appropriate, applicable or appropriate, अगर कोई एडजस्टमेंट में भी हुआ, any adjustments have been disclosed disclosed as as prior period यही एक डर लगा रहता है. कुछ हो गया.
इधर मत कीजिए। ये मैं ये क्लास में इसे 5-10 खत्म करके ही मैं क्लास बंद करूंगा, ऐसे नहीं। आप होगा तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा ये पार्ट। कुछ तो दिक्कत चल रहा है इसमें। अच्छा ठीक है, मैं पॉज कर रहा हूँ, ये हो जाएगा तो मैं फिर से। हाँ, prior periods, items, items in current years, current, एक बार देख लीजिए, हाँ देखा तो रहा है। current years, statement, statement of profit and loss, statement of profit and loss, ठीक है। मतलब क्या, determining whether the prior period's closing balances have been correctly brought forward to the prior period's closing to the current period, ठीक है। Or when appropriate, any adjustment have been disclosed as prior period items in current year statement of profit and loss। मतलब कोई भी एडजस्टमेंट क्या है कि जो पिछले साल का है वो करंट पीरियड प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया गया है कि नहीं, ठीक है। बी होगा, दूसरा होगा, the second one will be determining determining whether the opening balances reflect the reflect the application reflect the application of appropriate accounting policies of appropriate accounting policies and performing one or more one or more of the of the following,
परफॉर्मेंस वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्या क्या है उसमें? where prior where the prior year where the prior year financial statement were audited। इससे मैं इसको मिटाना नहीं चाहता क्योंकि अगर फिर से अटक गया तो वो भी एक टाइम वेस्ट होगा। आप समझ गए ना, were audited pursuing the copies of pursuing the copies of uh, the audited financial statement, the audited financial statement, including other relevant documents, other relevant documents relating to the private financial statement, relating to the prior period फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा क्या है? इवेल्युएटिंग 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 whether audit procedures whether audit procedures performed performed in the current period uh, current period। ठीक है, current period provide provide evidence relevant to the opening balances to the opening balances or performing specific audit procedures performing specific audit procedures to obtain to obtain audit evidence regarding the opening balances regarding the opening balances
ठीक है, तो ये शायद फिर से डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन आप तो लिखे होंगे, तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि द ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस about whether the opening balances contain misstatement material to the financial statement, ठीक है, current period financial statement, by कैसे, एक तो डिटरमाइन करो, डिटरमाइन whether the prior period opening balances correctly brought forward to the current year's balances, ठीक है, current period में, और if there is any adjustment वो properly disclose है कि नहीं in current period, if there is any adjustment whether that are properly disclosed in current period financial statement, and any adjustment have been disclosed as prior period items in the current year statement of profit and loss, मतलब prior period का कोई आइटम current period profit and loss में एडजस्ट हुए कि नहीं, ठीक है, determining whether the opening balances correctly reflect the appropriate accounting policies, yes, reflect the application of appropriate accounting policies, ठीक है, कि ओपनिंग बैलेंसेस अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं, एंड परफॉर्मिंग वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर, क्या है क्या, whether the prior period financial statement were audited pursuing the copies of the audited financial statement including other relevant documents, ठीक है, evaluating whether audit procedure performed in the current period provide एविडेंस रिलेवेंट टू द, मतलब करंट पीरियड में जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया गया है वो क्या ओपनिंग बैलेंसेस के लेके कोई एविडेंस दे रहा है कि नहीं, ओके, एंड परफॉर्मिंग स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग द, ये तो हो गया जनरल बात ना कि भाई जो करंट पीरियड जो अगर पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है तो उसको यूज करना है, देखना है कि जो इस साल में ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हूँ वो ओपनिंग बैलेंस को लेकर ऑडिट एविडेंस दे रहे हैं कि नहीं, एंड स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर शुड बी परफॉर्म टू ऑब्टेन रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस आल्सो, ओके, आई एम पॉजिंग दिस, ओके, also if the auditor obtains auditor obtains audit evidence audit evidence that the opening balances that the opening balances contain misstatements contain misstatements misstatements that could materially affect that could materially affect the current period financial statement, the current period financial statement, the auditor shall perform
such additional audit procedures, such additional audit procedures as are appropriate in the as are appropriate in the circumstances to determine the effect on the current period's financial statement. ठीक है? The auditor shall perform such additional audit procedure as are appropriate in the circumstances to determine the effect on the current period financial statement. There is audit evidence that contain material that the opening balances contain misstatement that could materially affect the current period, and the auditor shall perform such additional audit procedure as are appropriate in the circumstances. ठीक है? अच्छा, अभी जो मैं कराने वाला हूँ ना, ये आप एडजॉइनिंग पेज पे लिखना, क्योंकि ये आपके पास ना एक पेज पे लाइक वो एडजॉइनिंग पेज पे होगा ना, तो आपको देखने में और समझने में आसानी होगा. हेडिंग कीजिए प्रोसीजर्स adopted by the adopted by the auditor to obtain to obtain audit evidence audit evidence. मैं इसलिए बड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ कि जगह भी ऐसा हो कि भाई पूरा आ जाए हेडिंग में. रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस regarding opening balances. Okay.
है, मैं पॉज कर रहा हूँ थोड़ा देर के लिए क्योंकि ये, हाँ, ये कुछ कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। तो आप लिखिएगा नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसीजर्स depends on depends on matters such as किस किस के ऊपर, accounting policies, accounting policies followed by the entity, followed by the entity। दूसरा है नेचर ऑफ अकाउंट्स बैलेंसेस, नेचर ऑफ अकाउंट बैलेंसेस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड डिस्क्लोजर। Risk of material misstatement in current period financial statement। Significance of opening balances, significance of opening balances, whether the prior period financial statement, whether the prior periods financial statement were audited and modified, ठीक है। किस किस मैटर्स पे डिपेंड करता है, अकाउंटिंग पॉलिसी, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर किस किस मैटर पे डिपेंड करता है, अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड बाय द एंटिटी, नेचर ऑफ अकाउंट बैलेंसेस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एंड डिस्क्लोजर्स, risks of material misstatement in current period financial statement, significance of opening balances and whether the prior period financial statement were audited and modified। अच्छा, इसमें मैं ब्रैकेट क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऐसे भी आपका पॉइंट्स में है तो उतना भी ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स है। नेक्स्ट है if
prior periods financial statements were audited by a were audited by a predecessor auditor। predecessor auditor मतलब इसके पहले वाले जो ऑडिटर थे वो predecessor auditor। ओके, तब क्या करेंगे? द ऑडिटर the auditor may obtain sorry may be able to obtain sufficient and appropriate audit evidence। ये तो आप पढ़े ही हो कैसे, अगर predecessor auditor अगर होगा तो आपको कैसे करना है। audit evidence by कैसे करना है? pursuing the copies of pursuing the copies of the audited financial statement, the audited financial statement, including the other relevant documents, including the other relevant documents, the other relevant documents relating to the relating to the prior periods financial statement, such as supporting schedules, schedules to the audited फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब ये तो आप पढ़े ही हो कि अगर पिटिशनर ऑडिटर मतलब पिछले वाले ऑडिटर से अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुआ होगा अगर, तो ऑब्वियसली pursuing the copies of audited financial statement including the other relevant documents relating to the prior period such as supporting schedules to the audited financial statement। ठीक है,
अभी से स्टार्ट हो रहा है मेन। ये आप एडजॉइनिंग पेज के ये लेफ्ट साइड में लिख दो ये दोनों, और राइट साइड में अभी जो होगा ये लिखना, ठीक है। अभी ओपनिंग बैलेंसेस के ये तो है कि प्रोसीजर एडॉप्टेड बाय द ऑडिटर, मतलब क्या क्या प्रोसीजर एडॉप्टेड होगा ऑडिटर के साथ ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस। अभी करेंट एसेट एंड लाइबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंसेस को लेके आप क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर एडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। देखिए फॉर करेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, करेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हो आप? अरे घूम ही जा रहा है। द कलेक्शन, द कलेक्शन और पेमेंट, पेमेंट किसका? क्रेडिटर को सोच लीजिए, और कलेक्शन किसका? डेटर ऑफ ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल तो पता ही होगा आपको, इंटर में हो, रिसीवेबल और पेबल्स, और पेबल्स ड्यूरिंग द करेंट पीरियड, ड्यूरिंग द करेंट पीरियड will provide some audit evidence of their existence, some audit evidence of their existence, of their existence, rights and obligation। अभी जो ओपनिंग कलेक्शन व पेमेंट ऑफ ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल और पेबल during the current period will provide some audit evidence of their existence, completeness and valuation, completeness and valuation, rights and obligation, rights and obligation at the beginning of the period, at the beginning of the period, ठीक है। कि भाई जो है पेमेंट रिसीव हुआ है या फिर पेमेंट, सॉरी इनकम रिसीव हुआ है या फिर पेमेंट गया है, तो ऑब्वियसली वो ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल और पेएबल को लेके ऑडिट, मतलब उसका एग्जिस्टेंस, राइट एंड ऑब्लिगेशन, मतलब एसेशंस को लेके ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करेगा। तो पीरियड, ठीक है। अभी इन्वेंट्रीज पे ये हो गया, अदर देन इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज क्या हो गया? फॉर इन्वेंटरीज,
Observe a current physical inventory count. A current physical inventory count and reconcile it to the opening inventory quantities. Opening inventory quantities. They perform audit procedures on the on the valuation of the opening inventory, the opening inventory items. Inventory items and performing audit procedures. Performing audit procedures on gross profit and cutoff. On gross profit and cutoff. तो इन्वेंट्री के लिए क्या है? ऑब्जर्व ए फिजिकल इन्वेंट्री काउंट. ऑब्जर्व ए फिजिकल इन्वेंट्री काउंट. ठीक है. And reconcile to the opening inventory quantities. Perform audit procedure on the valuation of inventory. On the valuation of opening inventory. कि valuation ठीक है कि नहीं. And performing audit procedure on gross profit and cut off. अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट तो आपको पता है, तो कट ऑफ क्या है? पहली बात, कट ऑफ आपका आएगा इसके बाद वाले चैप्टर में ही आएगा, आप अच्छी तरीके से जान पाओगे, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ कि कट ऑफ प्रोसीजर है कि जो इस साल की इन्वेंट्री है वो इसी साल में रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, या फिर जो प्रायर पीरियड की इन्वेंट्री है वो प्रायर पीरियड में ही रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं. ठीक है, उसका पीरियड करेक्ट है कि नहीं, ये है कट ऑफ प्रोसीजर. बाकी क्या आप बाद में चैप्टर नंबर 5 पे और अच्छे तरीके से जानोगे. ठीक है, ये हो गया. अभी क्या है? नॉन करंट एसेट एंड लायबिलिटीज. और नॉन करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज. पहले तो एग्जामिन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. एंड अदर इंफॉर्मेशन एंड कॉन्फर्मेशन विद थर्ड पार्टी. एंड दूसरा, क्योंकि नॉर्मली ओपनिंग बैलेंस में ना जो नॉन करेंट एसेट एंड लायबिलिटीज है उसका उतना डिफरेंस आता नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली
लाइक सबको पता है कि वो 1-2 दिन में उतना ज्यादा नॉन करेंट एसेट में कुछ चेंजेस होगा नहीं। ऐसे भी अगर चेंजेस होगा तो एग्जामिन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन कंफर्मेशन विद थर्ड पार्टीज आप कर सकते हो। थर्ड पार्टी, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का procedure adopted by the auditor to obtain audit evidence regarding the opening balances, ठीक है। ये for current asset and liabilities, inventories and for non current asset and liabilities, ठीक है। इसमें इन्वेंट्री एक मेन है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं आपके लिए, सभी मेन है, सब कुछ पढ़ के जाना होगा आपको। अभी रिपोर्टिंग क्या क्या करेगा ऑडिटर, व्हाट विल बी द रिपोर्टिंग बाय द ऑडिटर इन रेस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंसेस, ठीक है। इट इज अ स्टार मार्क क्वेश्चन। Reporting by the auditor with regard to with regard regard to opening balances। इसमें 3 केस होगा। फर्स्ट केस विल बी if the auditor conclude that क्या कंक्लूड किया, the current periods the current periods accounting policies accounting policies are not consistently applied are not consistently applied। और दूसरा, a change in accounting policies, a change in accounting policies is not properly is not properly accounted for or not adequately disclosed and presented। Accounted for and not properly not adequate।
not adequately adequately presented or displayed, presented और disclose। ठीक है, आप पहले केसेस लिख दीजिए, फिर क्या करना होगा उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अरे भाई साहब, ओए होए, ये साइट में क्यों नहीं हो रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है। ठीक है, ये एक केस हो गया। सेकंड केस कैन बी if the auditor if the auditor is unable to obtain unable to obtain sufficient appropriate audit evidence to create audit evidence regarding the opening balances regarding the opening balances। आप एग्जाम में ऑब्वियसली ऐसे नहीं लिख के आइएगा, प्रॉपरली एक पॉइंट टू पॉइंट करके लिखिएगा। अभी नोट्स के लिए ये मेथड ही सबसे अच्छा होगा आपको एक बार में देखने के लिए, ठीक है, इसीलिए मैं ऐसा लिखा रहा हूँ। And the third one will be if the auditor concludes that the opening balances contain a misstatement that materially materially affects the correct period financial statement, the correct periods financial statement। If the auditor concludes that the opening balances contain a misstatement that materially affect the current period financial statement। तो तीन केसेस है, ठीक है, जिसमें रिपोर्टिंग करना होगा ऑडिटर को। एक है कि ऑडिटर कंक्लूड दैट द करंट पीरियड अकाउंटिंग पॉलिसीज आर नॉट कंसिस्टेंटली अप्लाइड, देयर accounting policies are not consistently applied are not consistently applied and changes in accounting policies is not properly accounted for and not adequately presented or disclosed। दूसरा केस क्या है, द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंसेस एंड इफ द और तीसरा केस है इफ द auditor concludes that the opening balances contain a misstatement that that materially affect the correct period financial statement। current period current है ना,
करंट, करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्या होगा, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। द ऑडिटर, इस केस में द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड, अभी क्वालिफाइड ओपिनियन क्या है, एडवर्स ओपिनियन क्या है, राइट ओपिनियन और एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्या है, ये सब पढ़ोगे आप चैप्टर नंबर 8 पे। अब बस जान लो कि क्वालिफाइड ओपिनियन है, क्वालिफाइड ओपिनियन मतलब कुछ गलती है, ठीक है। एडवर्स मतलब ऐसा स्टेटमेंट है जो वो लाइक बहुत ज्यादा परवेसिव आप नहीं समझोगे, लाइक वो बहुत सारे एसेशन को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ऐसा एक्सप्रेस है क्वालिफाइड ओपिनियन और एडवर्स ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन मतलब उसमें एडवर्स ओपिनियन भी आता है और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भी आता है, ठीक है। द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस, द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस, द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अभी के लिए ये समझ लो हम लोग तभी देते हैं जब हम लोगों का ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं होता है, तो हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते कि इसमें मिसस्टेटमेंट है भी या नहीं भी। अगर मिसस्टेटमेंट नहीं भी है, वो उसके लिए भी तो मुझे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा ना। इफ देयर इज नो मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, at that time also we have to obtain sufficient appropriate audit evidence to back it up ना। qualified opinion or disclaimer of opinion। And in this case, there could be material misstatement. The opening will contain a misstatement that materially affects the current period financial statement. The auditor shall express a qualified opinion or adverse opinion। एडवर्स ओपिनियन जब मेटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब हो, उधर उधर कुछ गलती हो, और डिस्क्लेमर ओपिनियन तभी होगा जब हम लोगों का कोई ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है, या फिर ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। और एडवर्स ओपिनियन और एडवर्स ओपिनियन। तो आज हम लोग पढ़े एसे 705 और एसे 705, सॉरी एसे 505 और एसे 510, जिसमें था ओपनिंग बैलेंसेस को लेके। तो अभी थोड़ा ये वन नो थोड़ा ज़्यादा ही डिस्टर्ब करे, इसे ऊपर वाला सारा मिट गया है। तो ठीक है, इसके बाद कल हम लोगों का स्टार्ट होगा इसे 550, जो है रिलेटेड पार्टीज। अभी दो ही ऐसे बाकी है, एक है 550 एंड उसके बाद है ऐसे 520। ठीक है, ऐसे 520 मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर। तो
उसके बाद हम लोग का स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 5 ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें मजा आएगा, उसमें बहुत कुछ आप प्रैक्टिकल सीखने पाओगे। ये भी प्रैक्टिकली है, तो उसमें और ज़्यादा मजा आएगा। तो बाय। और हाँ, अगर आपको ये क्लासेस अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर जो भी सीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसको भी क्लासेस का नीड होगा उसको आप शेयर कीजिएगा। ठीक है, बाय।